Hello friends, welcome to ProTalent and this is our reading comprehension practice session number 2. I'm sure you are aware that ProTalent brings to you a score booster part. आपकी एग्जाम जो कुछ लोगों की IIM IPM है जो 10th मई को है और जो स्टूडेंट्स की एग्जाम CLAT है दैट इज 26 मई को है, उन लोगों के लिए ये पूरा का पूरा सपोर्ट ProTalent की तरफ से इन द नेम ऑफ स्कोर बूस्टर. We think the kind of questions we are providing to you. Remember, at the last moment, practicing question is very important, okay? हम जिस तरीके के questions आपके सामने लेकर आए हैं, those questions will develop conceptual clarity, number one, and number two, it will make you competitive, okay? So, बिल्कुल ये score booster को देखना भूलिएगा मत. It will give you full support for your exam. Now, this is a practice session number 2. Reading comprehension we are doing through a video mode. Okay, बहुत बार ऐसा माना जाता है it is very challenging, पर मुझे लगता है that we are able to manage. ठीक है, आप बताइएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको ये वीडियो में पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी दैट इज टू गो टू ProTalentDigital.com, रजिस्टर करें और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 को डाउनलोड करें. ओके, जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये पैराग्राफ आ जाएगा. ठीक है, आगे की जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसको 2 मिनट रुक जाइए, पॉज करिए, पहले रीडिंग करिए, पहले सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, सॉल्व करिए, फिर इसको मेरे साथ आप देखिए इस वीडियो को. मुझे लगता है कि वो आपको काफी ज्यादा फायदा करेगा. दिस इज द मेथड टू बी एडोप्टेड. ठीक है, आई एम रिपीटिंग द मेथड. व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट इज डाउनलोड PDF, read all the questions, solve all the questions, and then watch video with us. Okay, that will give you a good support. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं and we start with this. This is an interesting paragraph about India's parliamentary democracy. फटाफट पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया है. ओके, सो आई विल बी स्पेंडिंग सम अराउंड 3 minutes roughly to read this entirely and then we will jump to the questions. ठीक है, चलिए देखते हैं. इंडिया हैज बीन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. आपको याद होगा कि हम बात करते हैं कि जब भी पढ़े तो कहीं कहीं जब कॉन्ट्रास्ट वर्ड आ जाए या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सा सेंटेंस आ जाए, वहां पे रुकिए, समझिए क्या बात हो रही है. So it has been parliamentary democracy which is world's largest ever since British left 1947 after 2 centuries of colonial rule. Factual है, ठीक है. Despite poor literacy rate, high level of political awareness, ठीक है, among its 1 billion people has ensured. Now this is very important point. Okay, high level of political awareness among its 1 billion people has ensured that democratic norms are on the whole firmly rooted in people's behavior and attitude. Very important sentence. Okay, ये बोलता है कि भाई even people were not literate but still people has very high level of political awareness. India's political culture is vibrant and varied. It has a strong federal government. Federal, I'm sure you are aware, federal is all states are in a way autonomous, okay, and they come together to work with a country. Okay, but the regional states also enjoy considerable power and regional parties are becoming increasingly popular. So here political parties के बारे में बात हो रही है. Not just that we are a strong federal, but our political parties at a regional level, they are also very strong. So this also very important sentence. ठीक है, the prime minister is the head of the government requiring support of majority of national parliament. That's a very easy one. President is the head of the state. Judiciary is independent. ठीक है, India is currently ruled by coalition government until 1991. Economy was characterized by Soviet style central planning for industrial development and a minimum foreign participation. ठीक है, that's also a fact. The result was protectionist policies and a large and inefficient public sector. Although a big and diversified private sector exists and agriculture remains almost entirely in the
private hand. In 1991, economy radically transformed, liberalization and greater foreign participation were ushered in. This has been a slow process, but it is now appear to be irreversible. बहुत काम का point है. More economic reforms are gradually being introduced. India is not a country but like a continent. ठीक है, from north to south, east to west, people, languages, customs, ठीक है, and the cuisine and the landscapes are astonishingly different. So we are not one group of people, we have a diversity, and with diversity we are one. There are few countries on the earth with the prodigious diversity that India has to offer. Okay, so such a big diversity, prodigious is something very much well known. Okay, if you want to see temples, there are temples in profusion. If you look at its history, India has a plenty of forts, abandoned sites, ruins of monuments, and so on and so forth. If you want to lie on the beach, there are enough this to satisfy the most avid sun worshipper. If walking and hiking are your favorite pastime, trekking routes of Himalaya, and they are very good, and India is what you make of it and what you want to be. Okay, so this is interesting. Last sentence is very interesting. Okay, so here overall it talks about India. डेमोक्रेसी के बारे में बात चालू करी, कैसी डाइवर्सिटी है, वहां से दे मूव्ड टुवर्ड्स आवर हिस्टोरिकल पास्ट एंड ज्योग्राफी. ओके, एक ब्रॉड ओवरव्यू में इंडिया के बारे में बात करी है. नाउ द क्वेश्चंस will become tricky. Okay, so we have to be very careful when the paragraph is very easy. ठीक है, हमारा फोकस होना चाहिए कहां कहां पे उन्होंने भारी भरकम आइडिया दिया है या कहीं भारी भरकम वर्ड यूज किए हैं. If we can find out those difficult words and the sentence, possibly हमारा ये पूरा का पूरा understanding will become easy. Okay, let's see the question number 1. It says, what does the author intend to communicate through the last statement of the passage? What is the last statement? India is what you make of it, or what you want it to make, what it want to. So it says India is what you make of it or what you want it to be. So India को आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा इंडिया है. Okay, that is the meaning. Okay, let's see the sentence. So ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे they would like to know that did you understand the sentence or not. अगर आपको सेंटेंस समझ में आया, can you make it in a little reframed manner. Okay, that is what basically the question is. So देखते हैं. India is very flexible nation and Indians are subservient in mentality. Now this subservient, that is a servant like attitude, negative word hai. There is no negativity coming into this sentence. This sentence is general, very neutral or positive sentence. So therefore this is not the answer. India has something to offer for every whim and fancy of a person. So that means India is what you make of it and what you want it to be. That means आपके whims और fancy के मुताबिक आपको जैसा इंडिया चाहिए वैसा इंडिया होगा. This is what the sentence is saying. That means it is offering for every whim and fancy of a person. हो सकता है. Okay, India is being a democratic institution. The onus of its taking a particular direction rests solely on the shoulders of its people. अब ये कनेक्शन ठीक है इसके साथ नहीं बैठ रहा because it says you want to make it. That means it is referring to a general person, any person, whether it's a part of India or outside, and he is coming to India. For him, India is offering such whims and fancy. So this is also not appropriate. India is a great tourism destination. ठीक है, अब ये tourism destination के नजरिए से बात तो सही है, but this statement is not very appropriate. Compared to this, B would be very logical. So answer would be B. Okay, indeed that's the answer. Okay, question number 2. Which of the following is true about the present state of Indian economy? Okay, so where is this present state of current Indian economy is discussed? Okay, so it says liberalization and greater foreign participation were ushered in. This has been a slow process, but it appears to be irreversible, and more economic reforms are gradually being introduced. Okay, so ये sentence में
करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बात हो रही है. लेट्स सी द ऑप्शंस. इंडियन इकोनॉमी हैज लिबरलाइज्ड रैपिडली एंड टुडे इंडिया इज thoroughly global market. ये नहीं बोला है, उन्होंने बोला है it's a slow process and it is irreversible and more economic reforms are yet to come. Okay, so therefore this doesn't look strong. Okay, Indian economy is liberalizing gradually. हो सकता है because they say it's a slow process and it is still continuing. So this looks pretty much okay. Let's talk about C. Public sector enterprises dominate एग्रीकल्चर सेक्टर इन दी कंट्री. ऐसा बोला ही नहीं है एंड नन ऑफ दिस के सामने बी लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, सो माय आंसर वुड बी बी. लेट्स सी. ओके, दैट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज. पैसेज के मुताबिक इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ओके, देखते हैं. इंडिया हैज अ पुअर लिटरेसी रेट. ओके, सो इन्होंने बोला है डिस्पाइट पुअर लिटरेसी रेट हाई लेवल ऑफ यू कैन से पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में बात करी है. सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू पैसेज दिस इज ट्रू. ओके, नाउ देयर इजंट एनी मेंशन दैट आफ्टर 1991 ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ. सो दैट मीन्स वी कैन नॉट से दैट लिटरेसी रेट हैज इंप्रूव्ड. ठीक है, वी कैन नॉट मेक एनी assumption आउट ऑफ दिस. So therefore this is really not okay to say this is false. I think this is true. Okay, next, India is a federation. ठीक है, बिल्कुल बात करी इन्होंने. ठीक है, इंडिया इज अ फेडरेशन. कैसे पता चला इंडिया इज अ फेडरेशन? ठीक है, इन्होंने बोला है दैट इट हैज अ स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट. ठीक है, सो ये इन्होंने बोल दिया है. सो दैट मीन्स इंडिया इज अ फेडरेशन. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट. ये भी क्लियर कट बोला है. सो व्हाट इज फॉल्स? नथिंग इज फॉल्स एंड देयरफॉर आंसर वुड बी डी. ओके, चलिए, ग्रेट. एंड क्वेश्चन नंबर 4 talks about what? Which of the following is essentially responsible for safeguarding democratic system in India? Okay, so which is essential? Here it is mentioned that despite poor literacy, a high level of political awareness among its 1 billion people has ensured that democratic norms are on the whole firmly rooted. Okay, so that means it is basically the high level of political awareness. Okay, so it is high level of political awareness possible. Regionalism and regional party वो point नहीं है. Fourth estate of the nation वो तो कुछ बोला ही नहीं है. What is fourth estate वो तो पता भी नहीं है और बताया भी नहीं है. ठीक है, सो ये आंसर नहीं होगा. हालांकि फोर्थ एस्टेट का मतलब होता है फ्री प्रेस. ठीक है, टोटल 4 एस्टेट होते हैं कोई भी डेमोक्रेसी के लिए. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड फ्री प्रेस. ओके, सो यहां पे उसके बारे में बात नहीं करी गई है. ठीक है, सो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? ए. ओके, चलिए, ग्रेट. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द पैसेज. पैसेज में से हम क्या डिड्यूस, दैट मीन्स कंक्लूड कर सकते हैं. नंबर 1, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर support from the majority of national parliament. Okay, now there is nothing mentioned about president of India requires what kind of thing. तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है. Let's talk about number B. Indian judiciary is independent from, you can say, other arms of the government. ये कहीं पे पता है क्या? बिल्कुल पता है. इन्होंने बोला है the judiciary is independent. ये उन्होंने clear cut बोला है. So this could be deduced. Private sector in India has come into prominence since 1991. 1991 के बाद liberalization हुआ. Okay, now with liberalization we cannot comment exactly that private sector has come into prominence. We don't know कि liberalization की वजह से ये prominence में आए. Okay, so आंसर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से बॉम्बे. ओके, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर सपोर्ट. उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है. ये एक छोटा सा कंक्लूजन हम डिराइव कर सकते थे, पर उसके पीछे का एजम्पशन ये है कि लिबरलाइजेशन के बाद इट इज ओनली प्राइवेट सेक्टर विच हैज ग्रोन. अब ये एजम्पशन इज लिटिल बिट अहेड ऑफ द पैराग्राफ, तो हम उसके ऊपर से कुछ बात नहीं कर पाएंगे. आंसर हो जाएगा आपका बी. ओके,
चलिए ग्रेट. सो इंडीड दैट इज द आंसर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट पैसेज नंबर 2. So, due to their incredible military force, religious zeal, uncompromising goal for profit, Europeans often imposed their traditions, values, and customs on the people with whom they traded. So, उन्होंने ज्यादातर क्या किया, जिनके साथ ट्रेड करते थे उनके ऊपर अपने ट्रेडिशंस, ठीक है, अपने वैल्यूज और कस्टम्स थोप दिए. ओके, they frequently acted without regard to the long-term welfare of others, as their principal concern was short-term economic gain. Since many nations that traded with Europe placed high value on their historical customs, some natives became deeply disconcerted by the changes that occurred as a result of European power. So, some natives became deeply disconcerted. उनको नहीं अच्छा लगा, है ना. दे फेल्ट बैड. डिसकंसर्टेड होना दैट मीन्स एक तरीके से हेट्रेड की फीलिंग डेवलप करना, डिस्कम्फीचर डेवलप करना. ओके, सो दिस इज व्हाट दे डेवलप. दिस फैक्टर्स coupled with perennial domestic political instability. What is perennial? Perennial is forever. Okay, so ये फैक्टर्स और साथ साथ जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पेरेनियल बरसों से चली आ रही थी, caused numerous countries to grow increasingly resistant to European influence. So ये सब फैक्टर तो थे ही, और साथ साथ में इन सभी कंट्रीज में बरसों से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती थी. दैट मींस अगर नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, ठीक है, दैट इज ऑफ ब्रिटिशर्स और दैट इज यूरोपियन पीपल, वो भी एक तरीके से स्टेबल नहीं हो पाएगी. दिस इज द मीनिंग. ओके, वन पोटेंट एग्जांपल ऑफ दिस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट can be seen in the actions of Tokugawa government of Japan. In its seclusion edict of 1636, government attempted to extricate cultural interactions with Europe from intimate fabric of Japanese society. So they attempted to extricate कल्चरल इंटरेक्शन. एक्सट्रिकेट, इंट्रिकेट होना, एक दूसरे के साथ मिक्स होना, एक्सट्रिकेट एक दूसरे से दूर रखना, दैट इज इंट्रिकेट एंड एक्सट्रिकेट. ओके, ये ध्यान रखना, बहुत ही काम का सेंटेंस था, यहाँ पे पक्का कोई मजेदार सवाल बन सकता है. ओके, द एडिक्ट अटेम्प्टेड टू accomplish this by focusing on 3 areas, which are those. First, it sought to curb cultural exchange by eliminating people, we can say bringing European ideas to Japan. So सबसे पहला इन्होंने एक कल्चरल एक्सचेंज को कर्ब किया, जो भी यूरोपियन कल्चर आ रहा था उसको उन्होंने रोका. The edict stated Japanese ships shall by no means be sent abroad. All Japanese residing abroad shall be put to death when they return home. So ये हो गया पहला रूल. Second, the edict focused on limiting trade. Article 11 through 17 of the edict imposed stringent regulations on trade and commerce. So दूसरा तरीका हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना. Third, government banned Christianity, which it saw as an import from Europe that challenged long established and well enshrined religious tradition of Japan. ठीक है, तो उन्होंने उसको रोक दिया. गवर्नमेंट वेंट टू कंसिडरेबल लेंथ टू प्रोटेक्ट इट्स कल्चर. ओके, सो उन्होंने अपने कल्चर को रोकने के लिए 3 चीजें करी. ओके, एक तो जो बाहर का कल्चर है उसको इन्फ्लुएंस नहीं होने के लिए लोगों का मूवमेंट रोक दिया, ठीक है, ट्रेड रोक दिया. एंड थर्ड, यू कैन से दे बैंड क्रिश्चियनिटी. ओके, ठीक है. देन आर्टिकल 8 ऑफ द एडिक्ट स्टेटेड even ships shall not be left untouched in the matter of exterminating Christians. With the example of Japan and examples of other countries that chose a different response to European influence, it perhaps not too far of a stretch to conclude that Japan made a right decision in pursuing a path of relative isolationism. So एक तरीके से देखा जाए तो ये उन्होंने जो डिसीजन लिया दैट इज आइसोलेशनिज्म, जो उन्होंने डिसीजन लिया रिलेटिव आइसोलेशनिज्म
लेशनिज्म का जो डिसीजन लिया, which is really okay. As history unfolded during the next 400 years, in general, countries that embraced यूरोपियन हेजेमनी, जिन्होंने यूरोपियन पावर को एक्सेप्ट किया, whether by choice or by force, tended to suffer from pernicious wealth inequality, perennial political instability and protracted underdevelopment. उनके तीन पहलू है जिन लोगों ने कॉलोनियल दैट इज यूरोपियन पावर को बाय चॉइस या फोर्स एक्सेप्ट किया, उनको तीन परेशानियां हुई. एक तो पर्निशियस इज हार्मफुल वेल्थ इनइक्वालिटी हुई, उन देशों में वेल्थ की इनइक्वालिटी. नंबर टू, पेरेनियल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमेशा के लिए वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. एंड प्रोट्रैक्टेड अंडर डेवलपमेंट, सो अंडर डेवलपमेंट वहां पे होता रहा. Okay, this is what basically you can say paragraph all about. Okay, saying that how the influence of European colonization on various countries, उसके ऊपर उन्होंने बात करी है. Let's see the questions here. ठीक है, क्वेश्चन बहुत मजेदार है. ठीक है, it says it can be inferred from the passage that in 1636 the Japanese government ने क्या किया. So this is seclusion edict of 1636 के बारे में बात हो रही है. सो उन्होंने क्या किया. It saw its citizens living abroad as potential threat. हो सकता है they felt कि जो भी जापानीज लोग बाहर रहते हैं they are the threat, और उनको बैन किया. या तो अगर वो इंडिया में आएंगे, या तो वो अगर जापान में आएंगे तो उनको उन्होंने डेथ पेनल्टी दे दी. Considered all foreign religion as danger. Not all, remember that this is not all, okay, this is only Christianity. So ये ध्यान रखिएगा. Disagreed with the European philosophy that trade brought wealth. ठीक है, अब इसके बारे में कुछ उन्होंने बोला नहीं है. Foresaw the economic dangers of European trade and imperialism. मतलब वो देख पाए फ्यूचर में कि यूरोपियन ट्रेड और उससे इकोनॉमिक डेंजर्स क्या होंगे, ऐसा उन्होंने कोई देखा नहीं. दे सिंपली रियलाइज्ड इट, और जिसकी वजह से आंसर हो जाना चाहिए ए. ओके, चलिए, ग्रेट. सो आंसर शुड बी ए. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. द ऑथर मोस्ट लाइकली included the quotation from article 8 of the edict. Okay, so where is this article 8? Okay, article 8 of the edict. ठीक है, even ships shall not be left untouched in the matter of exterminating Christians. Okay, उसके बारे में बात करी है. ठीक है, so the most likely included the quotation from article 8 of the edict at the end of the second paragraph is to do what. Okay, उन्होंने इस सेंटेंस को क्यों यूज किया. आपने देखा होगा ये सेंटेंस के पहले इन्होंने बताया 3 बड़े चेंजेस करे थे, उसी का ये एग्जांपल दे रहे हैं. ओके, चलिए देखते हैं. सो हाईलाइट द वेनमस एंगर. venomous, that means zehरीला. Okay, anger many Japanese leaders felt towards importation of foreign religion. फॉरेन रिलीजन जो बाहर से आ रहा है, ठीक है, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी वेनमस एंगर निकाला. बात तो बराबर है, एंगर है. ओके, ठीक है, तो उसी के बारे में बात है, देखते हैं. एम्फेसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ जापानीज गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंसेस इट सॉ एज अ डैमेजिंग. ओके, अब यहां पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेनमस एंगर, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू टेक एक्शन अगेंस्ट this foreign, you can say, influences. So A के सामने B looks far more better because उन्होंने एक्शन लिया है और ये जो लॉ है उस लॉ में से कुछ पॉइंट उठाया है. सो इट इज एन एक्शन. ओके, नंबर C बोलता है illustrate how pervasive foreign religious influence had become in Japanese society. नहीं भाई, वो तो ऑलरेडी फैला हुआ है, ये उन्होंने बोल दिया था, उससे उनको परेशानी हुई, ऐसा उन्होंने बोला. Emphasis that European economic influence offered no justification for the edict and government relied instead on foreign religious influence to justify. ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई तरीके से वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है. सो ये गलत. और A और B में B is better because there is a strong determination is visible because there is an edict which is law. Okay, so there is a word called edict. edict का मतलब होता है एक law और it is an order. Okay,
चलिए great. So this is number 2 and this is number 3 now. Based upon the passage, the author would like you to agree most strongly with which of the following statements. अब ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी है. ये आपको पैराग्राफ में से कुछ मिलेंगे नहीं जब तक आपने पूरा पैराग्राफ समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया, उसके टोन्स को नहीं समझा, ऑथर के ओपिनियन को नहीं पकड़ा, तब तक आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. पर समझदार बच्चे वही है जिनको ओपिनियन समझ में आता है. समझदार बच्चे वही है जो टोन निकाल पाते हैं. यस और नो? उसी को तो इंटेलिजेंस बोलेंगे. दैट इज व्हाट यू नीड टू डेवलप capability for. Okay, so make sure that you develop capability to understand written material. लोगों का ओपिनियन, लोगों के टोन क्या है वो आपको पकड़ में आना चाहिए. देखते हैं अब इन्होंने क्या बोला, किसके साथ ऑथर एग्री करेगा. पहला, यूरोपियन डिसीजंस मेड ड्यूरिंग द 16th and 17th centuries in dealing with the Japan represent an aberration from the typical pattern of European decisions. अब ऐसा तो कुछ था नहीं कि वहां पे उन्होंने जापान के साथ कोई अलग तरीके से ट्रीट किया. वर्ड क्या है? एबरेशन. अगर एबरेशन समझ में नहीं आया तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन से कोई फायदा होने वाला नहीं था. एबरेशन का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल. तो ये तो होगा नहीं बिकॉज जापान के साथ उन्होंने कोई डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल किया नहीं है. नंबर 2, जापानीज रूलर्स who responded with ferocity to European influence bear part of responsibility for the caustic European-Japanese relationship that ensued. तो जो जापानीज रूलर्स थे, ओके, उनका बहुत ही ज्यादा फेरोशियस रिस्पॉन्स था अगेंस्ट यूरोपियन इन्फ्लुएंस. तो उनकी वजह से जो आज यूरोप और जापान के बीच में स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है वो उनकी वजह से है. ठीक है, अब यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं दिया है. ऑथर ने कहीं पे भी ब्लेम के नजरिए से कुछ बोला नहीं है. सो देयरफॉर दिस शुड आल्सो नॉट बी द आंसर. लेट्स सी विद द हाइंडसाइट ऑफ द हिस्ट्री. ठीक है, मतलब हमें प्रीवियस नॉलेज है, हिस्ट्री के बारे में पता है. अब पुरानी नॉलेज से आज हम बात करते हैं. जापान likely made appropriate decisions in extricating itself from European influence. ठीक है, तो ऑथर ये बोलता है कि जिन कंट्रीज ने, आप देखिए लास्ट वाला सेंटेंस, ठीक है, जिन कंट्रीज ने यूरोपियन हेजेमनी को देखा और मतलब उससे इन्फ्लुएंस हुए, चॉइस लगाई, ठीक है, या फोर्सफुली उनको लगाना पड़ा, उनको तो काफी प्रॉब्लम हुआ. ओके, और जापान ने अपने आप को उससे दूर रखा. ठीक है, तो आज हमें पता है कि कैसे जापान आगे बढ़ चुका है. इट इज नॉट, यू कैन से, ट्रबल्ड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अंडर डेवलपमेंट और इनइक्वालिटी. ये आज हमें पता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ हाइंडसाइट ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, और जापान ने जो भी डिसीजन लिए, ऑथर एक तरीके से इनके जो डिसीजन है, ये पूरी जगह पे जो डिसीजन दिए थे, उन डिसीजन के नजरिए से ऑथर इज एग्रीइंग विथ द प्रेजेंट, विथ द idea. Okay, and therefore this looks better. D बोलते हैं यूरोपियन रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज conflicted with European economic behavior towards Japan. अब ये यूरोपियन इकोनॉमिक बिहेवियर बदला कि नहीं बदला उसके बारे में नहीं पता है. ठीक है, कुछ बोला ही नहीं है. ठीक है, सो बेटर आंसर वुड बी सी. आई थिंक दिस वाज लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन. ध्यान से इसको समझिएगा. ओके, वापस जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसको देख सकते हैं. एंड लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैराग्राफ? ओके, प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैराग्राफ इज टू एक्सप्लेन द एक्शंस ऑफ टोकुगावा गवर्नमेंट इन जापान. नो, वो प्राइमरी पर्पस नहीं था. उनका प्राइमरी पर्पस ये था कि कैसे यूरोपियन क्या करते थे, उनकी कंसिक्वेंसेस के मुताबिक अलग अलग कंट्रीज का क्या रिस्पॉन्स था, उसमें से एक एग्जांपल जापान का दिया. सो देयरफॉर ए इज नॉट राइट. Compare the results of countries that pursued protectionism with those that pursued globalization. अरे भाई साहब, ये तो एकदम अलग हो गया. ठीक है, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करी गई है. See, explore the consequences of some European trade and exploration along with analyzing countries' response to it. ठीक है, उनके इन्फ्लुएंसेस क्या थे और इन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया. ये हो सकता है. डी, आर्ग्यू for the success of European trade as a means to create wealth and exert influence. ठीक है, ये यूरोपियन ट्रेड कितना पावरफुल था उसके बारे में कुछ बोला नहीं है. सो आंसर वुड बी सी. ओके,
चलिए ग्रेट, इंडीड दैट इज द आंसर। ओके चलिए, सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल, बट मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस मॉड्यूल एंड दैट इज अ थर्ड पैराग्राफ। ये रहा आपके सामने जो मैंने यहाँ पे दिया है, इसको अच्छे से पढ़िए, इसके साथ कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसको भी आप सॉल्व करिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रेगुलर प्रैक्टिस विल मेक अ बिग डिफरेंस। स्टूडेंट्स अब ये समझ लीजिए कि रोज रोज अब ये छोटी छोटी जो प्रैक्टिस स्कोर बूस्टर के साथ अगर आप रेगुलरली करेंगे, जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है, बिलीव मी उनके स्कोर में जो इंप्रूवमेंट होगा उसको तो 26 तारीख को ही पता चलेगा। ठीक है चलिए, एनीवे सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस एंड मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो इन केस यू लाइक इट। ठीक है, और साथ साथ में इस चैनल को शेयर करिए टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।